And today's thank you, Faisal Saab, for recording the session. I think we need to share the recording also with the exhibitors who will not join us, who may not be able to join us today, for their information. Thank you, Ignatius, for joining us. Today's session we have organized to inform the exhibitors about the hotel facility available, options available in near the venue, Sandton Convention Center. So, Mr. Ignatius, we would request you to share information about the different room facilities that you have, standard single, standard double, suite, and different options. Also information about halal food options, how far it is from the venue, and other facilities that Sky Hotel intends to extend to the exhibitors. Our event will begin on 29th November and it will end on 1st December. So arrival and depart, any relaxation or facilitation in early arrival or late departure or something like these. So I'll leave it up to you, Ignatius. I may leave in the middle, but my colleague from TDAP will be here representing the government, and we will have the exhibitors who will be asking questions. So thank you. Ignatius, good afternoon, everyone. Right, my name is Ignatius. I am the general manager of a hotel called Hotel Sky, which is in Sandton. We right next to the convention center, that is 300 to 350 meters away from the convention center. So we right next door, and we a hotel of 453 rooms, 4-star hotel with all the facilities, also small breakaway rooms, or conference rooms as well. So the hotel is a newly opened hotel, which was opened in 2020 during the midst of COVID. We have 5 different room types in the hotel, of which we have the standard room, okay? And then from the standard room, we've got the one for the physically challenged. And then from there, we've got a junior executive room. And then we have got an executive as well as a suite. The suites, we have 5 in the hotel. The executive rooms, we have 26 in the whole hotel. The junior suites, we've got 30 in the whole hotel. Then we have got 18 for the physically challenged, and then the rest are standard rooms with big beds, and a few have got 2 single beds. And we would really love the delegates to come and stay with us. We also right near the shopping complex, which is the Sandton Convention Center, and the complex on the other side, and we right there walking distance. We are halal friendly, and we get all our food from strictly halal accredited suppliers that are certified. So all guests that come here, we order the food from accredited halal certified suppliers that are strictly halal from that perspective. So we really would want the delegates to come and stay with us, and also we're very flexible in terms of the restaurants. With 4 restaurants that we have within the hotel, of which the biggest takes to about 240 to 350 delegates. It could be during breakfast, it could be during dinner, depending on sitting style. Then we have 14 breakaway rooms that we have for all our delegates. Some of them some as more as 6 people. So again, we're very, very flexible. If you come in the hotel itself,
the only hotel in South Africa where actually in the corridors, if one might say, we have espresso, tea, cafe latte, and the cappuccino making machines open to all our guests that you can just make. You don't have to pay a cent. You just make it anytime. Or 4 types of teas, you can just make it from there on the corridors on the machine. And this is kind of an added advantage. We also very techno savvy in terms of the equipment that we have. If you happen to book with us, you actually can even check in prior to your arrival physically at the hotel. That's how technical advanced we are. So all our guests can easily check in using their phone, an app on their phone, and then as soon as they arrive at the hotel, they can even proceed to their room, app on their phone, and they can use the app to open the room door, and then they can open the TV, and all their names will be appearing even on the TV screen. So that's how technically advanced we are. We actually very pro technology. Is a hotel that is in Africa or in Southern Africa. So we're leading that. We've got also a bit of robotics that we have, where that can actually be given information to feed you, greet you, to answer questions. And we're actually looking at the second version where part of the robots can be able even to do room service, can be able to carry a bit of even luggage, depending on what version we are going to upgrade towards. So we would really love to have all the delegates come and stay with us, and we are geared to come and welcome all the delegates to come and share their stay with us during the conference. So at this point, I don't know if you would want to ask any questions, which then I'll be able to answer those. The other also, we very central in a way that from the airport, we also 300 meters away from the Gautrain station, where from the airport guests just get into the Gautrain and then they come straight to the hotel. Or if you are going to come as a group, again, it's something that we can arrange, a bigger bus that will just take people from the airport and straight to the hotel at a cost, obviously, but it's something that we can always arrange. I don't know if there's any questions that the delegates would want to ask, or you think we should give. I have a question about registration process of your hotel. Our delegates are approximately 200 plus in numbers. But the thing is, if we go through booking.com or the other options for reservation, so it's different. How much are you charging from our exhibitors for a standard room with the double occupancy? Kindly mention that. Also, how can they register themselves being part of PATDC, so that you may know that these are guests from the Pakistan side coming for the exhibition? Yes, thank you very much. I think what we will do, we will share a block that we will send, and then that block is what we need to give all our delegates so that they can just book using that block. The rates for single occupants, we quoting 880 rand. That is per night, 880. Accommodation and breakfast. That's include the breakfast, R&D? Correct. It includes breakfast. Okay. That's for single occupants. For double occupants, it's 950. That is for 2 people if they are sharing. And as executive and junior executive? The junior executive, we charge, normally it goes at 2,100, but we will charge 1,550
1550 for the junior exec. Okay. And so Yes. you will share a code, a registration code with us that we can. Yes, so that you don't go on booking.com, you go on Hotel Sky block, and when you make the booking, it will ask you for the block, you put the block, the rate and everything comes in. You have your own website for registration if you want to go through your website. Yes, on the Hotel Sky website, yes. Okay. Yes. Yes. So We'll be sharing some code Yes. with us. Will you be sharing some code, right? Yes, we will share the code. Okay. I'll actually email it and then everybody can have, because from this I'll get the details of everyone who attended, then we can send. No, yes, email it to Miss Humaira. You have her email Okay. address? Yes. Yes. Okay, I've got your email address and everything. Yeah, so we will share it with the delegates. Once you share it with Madam Humaira, that would be more appropriate. वालेकुम सलाम आदाब, क्या हाल है? So हाँ. Also write a brief on the procedure that we may forward it to the delegates. I know it's Correct. simple. It would be simple, but still it would be helpful if you write a small guide on how to book through the website. Okay. using the code. Perfect. No, I will definitely do that. If anyone, any exhibitors has any question, you can kindly ask him about it, if you have any. These hello. जी आवाज आ रही है जी Hello. जी बोलिए. These rates you gave, these are in which, in South African currency, or in how much it will be in USD? Please let me know. Okay, yes, this is South African currency. I'm saying 880 divided by 17. Something like $52 US dollars for the single occupants. And Obviously, for doubles, how much it will be? Approximately 100. for double, it will be around $56. For double bed, sorry. Yes. Yes, Bedroom for a of- double. And obviously, I'm using today's exchange rate. I'm using the Okay. exchange rate, yes. Yes, I know. But secondly, you will give us facility of pick and drop to the exhibition hall? Yeah, but it's actually walkable distance. I'm talking about something like 347 steps from the hotel to the conference center. Okay. Yeah, it's if you drive, it might even take longer because you go through the robot. But if you walk across, it's actually shorter. You get there before a person who's driving. Yeah, okay, it's good. Yeah. How many rooms available right now? We have got 453 rooms. I'm trying to set aside almost about 250 to 300 rooms for you. 40 depth for the for conference. Okay. For all the delegates, yes. Okay. Thank you. Yes. Kindly please guide us. The price of one double bedroom is said at $56. If 1 day price. Sorry, are you asking if the rate is per night? Am I correct? Okay. Yes, that's right. It's per Yes. night. Yes, per night. It's per night, yes. जी आमिर साहब आपका क्वेश्चन है. Mr. Ignatius, thank you for Yes. joining. I just want to ask that if you could tell us the room rates of other category of rooms as well. It would The be other- appreciated. Yes, the junior executive, I said it's 1,550. In US dollars, we're saying divided by 17. We're talking about nearly $100 कितने डॉलर? for the junior executive. That's 95, 92. What On- about on the to- executive?
Executive. Executive, it's 1950 divided by 17. That's 115. Okay, thank you. Thanks a lot. Thank you very much. Hi, Mr. Ignatius. Do you offer pick and Hello. drop from the airport? Sorry, go ahead. Do you offer pick and drop from the airport if we do not arrive as a group, or if we arrive like just our company representatives? Will you still? No, we don't have transfers, but if you want, we can always arrange at a cost. Yes, we can make arrangements at a cost. How much is it? How much do you charge? They normally charge just under 400 per person one way. But if you come as a group, it gives me room to negotiate, and then at least if I can come up to some arrangement with them. No, if we are like 2 persons, so you will charge 800. Is that correct? Correct, yes, but negotiable. Okay, thank you. If we are 3%, Everything gets negotiated because we are not in the trade for transport, but we work with partners that we can go and say, John, we've got these guests. Maybe the company is called Springbok Atlas, for example. Then we say we've got a group of 10 or the group of 17, they are coming one way from airport to the hotel. How much do you charge them? They might say, okay, we charge 1,500 or we charge 1,200 for all the 17 people, things like that. if we stay 3% in a room, how much is that one? I can easily say it's 400 per person, but I'm not so sure how much lower do they go as the number increases. I can find out. Can you please share your details to book the room for us, and also let us know that are you giving us some sort of code so that whenever who is coming from TDAP into this exhibition can apply by putting that code into the subject line when we email you about the booking. No, we will. I think it will be better for you to book online on the Hotel Sky website, which I'm going to share with Ms. Umari, and then the code, the blog code as well, so that at least as soon as you book there, it won't ask you so many questions because it knows you are coming for this function. It just needs your dates that you are arriving and the dates that you are checking out, and because the other information is in the blog already. So we need to put in the subject that we are coming for this exhibition in these times. Yes, Okay. It should give you that option, yes. Okay. There also guide us the follow the procedure of the sampling for logistic point of view. Sorry, you were breaking? This is not meeting for the logistic issue. This is only meeting for the hotel, and it's how can you book the hotel? That is it. Okay, sir. Okay. कोई और questions है? Any other questions? Mr. Ignatius, can I ask you what the mode of payment would be? Should we need to pay at the time of booking online or pay at hotel? Please guide us. Yes. If you send, there's a system code we work with the bank where we can actually do the payments online, or we can get your credit cards and then we can swipe them. But I can reconfirm a more user-friendly system so that at least all the delegates can be able to use. And what that system would be? Do you have any idea how that will work? What I've seen is if you make international payments, sometimes some of them, they take long. So you don't want to be inconvenienced thinking that you haven't paid, yet you have paid already. So I think there's a system called Ivory that we use, or on your booking, because our website is secure. If you put your credit card, we can process the payment from this side. Okay. Yes. Do you have early arrival and late departure facility for the delegates? You mean
Look, Yes, for me, if you arrive earlier than time and depart late, for then me, you're, yeah. the standard for all my guests, Mhm. if you arrive now, I must Oh. give you a room. If you arrive at 6 in the morning, as long as the room is there, I'll give you. I'm not Okay. a hotel that says 2 o'clock is check-in time, 10 o'clock is Okay. check-out time, because you come in here for a reason. The flights arrive, some of them arrive 4 o'clock, like from Brazil and so forth. So when you arrive at the airport, whether it's 5:30, if the room is there, I will give you straight. What about the late departure? The late departures, they're always negotiable, but I can give you towards lunch and so forth. What is the standard departure time? Departure time is 10. It's 10. 10 a.m. Yeah. Yeah. Departure time. Yes. Anywhere in the world, we used to have usually 12 o'clock or it's like 2 p.m., which 10 a.m. is very early. No, actually, check-in is 2. Check-out is 10. Do you know why they do that world over? It's because when a person, it's taken that if a person checks out at 10, you need 2, 3, 4 hours to clean the rooms and freshen them up for the arrival. But I'm saying if you arrive at 10, I'll give you. If you arrive whatever time, I'll give you. And check out, I can always negotiate depending on availability, but I can give. How many hours you can extend for late departure? I can give you up to 2 o'clock at no charge. That's fair. That's fair. Thank you. Yeah. Thank you. To 12 o'clock, you're saying, sir? 2 p.m. 2 o'clock. 2 That would be o'clock. great. That would be great. Thank you very much. Yeah. Any other questions? Hi, Mr. Ignatius. I just checked the prices on Agoda, agoda.com, the website for hotel booking, and it's much cheaper than what you just mentioned. Like in our currency, on Agoda, it's showing 10,000 rupees, but what you mentioned is around 12,000. So what's the point of booking with your portal, on your portal? And especially we are coming in such a huge group, so I think there should be some special prices that you offer, and it should be like we're getting cheaper online. Thank you very much. What I've seen with the booking engines, what they say is they say from, but when you book, then it tells you something else, and also then it tells you it's room only, and there's so many things that they say to attract the eye, but when you go inside, you come here, you arrive, okay, no, you only booked on a room only rate, only to realize that actually that rate was actually cheaper than what you are talking about now. They always say from, but when you book, the same rate which you are saying from, it changes to be something else. I might have missed. I might have missed. Do you have a breakfast included in the room rates? Yes. Sorry? Do you have breakfast included in the room rates? Yes, breakfast is included in the room rate. Okay, thank you. Thank you. Yes. Because what happens is, let's say Agoda is saying 690, for example. You come here, you want to have breakfast, but it's 690 room only, or 650 room only. You hear you want to have breakfast, then breakfast is 195. You add your numbers, you realize that you're actually paying more. So they say something to attract you. That's the catchphrase. It's saying from. Breakfast included. No, I'm saying give it a try and see if it will be the same rate. But what I've seen with most guests when they arrive here, you start feeling deprived when you are here. Okay, thank you. Yes. Any other questions? What about the halal food in your restaurant? I missed that part of the conversation. Do you have halal food in your hotel? Yes, we are halal friendly, meaning we get our supplies from halal credit suppliers, right? We can make halal food because we are saying friendly because we've got dedicated pots for making that kind of food, where we don't mix with pork, where we don't mix, they've never been used with this. That we can do. However, for those that are strictly halal, we can also source from outside at a different price, because they come with a certificate. Each plate is certified with a sticker from those different companies. Okay. Yes.
Not like Mr. Ignis, I have a question regarding payment of hotel. Is it possible if we pay at on checkout, or we have to pay some amount in at the time of booking? Yes, it's you need to pay at the time of making the booking so that we guarantee the booking. And the last time you can pay is the day of arrival. Like we are around 200 plus people might be staying with at your hotel. And do you have the facility that if on demand, I don't know about the other people, my friends on this group, that if we ask you to arrange some sort of dinner for us for all the days, like 3 or 4 or 5 days, how many days we are there, so can you arrange something for us? I can arrange. I actually, I was talking to Miss Umaria to say I must have a Pakistan day in one of the days. Then I will have completely that whole restaurant. I want it to be for you, and then I make only food for you. You know, something like that. It's something in my mind that I wanted the delegates just to feel free, and then it's all days. You know. Okay, thank you. Thank you. Yes. Faisal bhai, can I ask you a question? Yes. Sir, आपकी तरफ से यानी एम्बेसी की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन एयरपोर्ट टू होटल की अवेलेबल होगी सर्विसेज? कि पहले भी मैं PATDC में नाइजीरिया में अटेंड किया है हमने, तो फैसिलिटेट कर रहे थे हमें होटल टू एयरपोर्ट और एयरपोर्ट टू होटल की। तो अभी हमारा प्लान तो है ऐसा आमिर साहब, इसमें हमारा we have this plan to pick you up from the airport and drop you at the hotel, but only recommended hotels. The recommended hotels are sure, hotels. And Sky hotels. So we are planning to do it, but we will confirm you shortly. Okay, thank you. Okay, so Mr. Ignatius, kindly share the code and the procedure to register on your website so that we may share it with all our delegates. Correct. Ms. Humaira. No, we'll do definitely. Are there any other questions for Mr. Ignatius? No, I think that is it. So thank you so much, Mr. Ignatius, and thank you for all the delegates to join this meeting. Thank you very much for giving me the chance to talk to you. Please, I'm readily available. If I can share my number, I'm on WhatsApp. I don't know if I can share it here. I'm also on WhatsApp for those that might want to ask any other information after this meeting. With your permission, I can share my number. Yeah, sure. It's not an issue. Please. Okay. You will share it in the chat. Okay. Yes, I'll share it now in the chat so that everybody can have my details. Sure. Thank you very much. I'm just putting my details there as we speak. All right. Right. Is that all right? Yes, it's right. Thank you so much again, Mr. Ignatius. Thank you. Thank you very much. Kindly do share the details with Ms. Humaira at the earliest so that we may forward it to our delegates. Oh, perfect. I'll do. I'll send. जी डेलीगेट्स आप अगर स्टे करके हमसे कुछ बात करना चाहें तो आप लोग लॉग आउट ना करें। मिस्टर इग्निशियस वी वुड मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा कि कोड मंगवा के जो आप बुकिंग कराना चाह रहे हैं इंडिविजुअल की, अगर कोई एक लिस्ट कंबाइन आप लोगों की तरफ से चली जाए
वेरीफाई करके और आप ही की तरफ से ये बुकिंग चले जाएं और सबको एक स्टैंडर्ड रेट आ जाएं, लग जाएं, और अपनी अपनी लोग डिमांड बता दें, सिंगल ऑक्यूपेंसी है, डबल है, कैसे है। तो ये मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर नहीं है कि हम लोग सारे इंडिविजुअल एक कोड लेके बुकिंग पे जा रहे हैं, कोई किसी को मतलब एट द टाइम बुकिंग वो पैसे दे रहा है, कोई रिसेप्शन पे दे रहा है। तो ये अगर ये आप लोगों की तरफ से आ जाए एक प्रॉपर वे में, जैसे आप लोगों ने लाहौर में मैनेज किया था टीडैप को, तो आइडिया कैसा है इसके बारे में प्लीज बताइएगा कुछ। सर पेमेंट का इशू आ जाएगा इसमें से। हम बुकिंग में नहीं, आपका इसमें नाम तो भेज सकते हैं कि ये गेस्ट आएगा, लेकिन जब तक पैसे पेमेंट नहीं होगी तो ऑब्वियसली टिल लास्ट मोमेंट वो कंफर्म नहीं होगा कि डेलीगेट वहां पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। किसी को अगर बेहतर देखिए ऑप्शन जिन लोगों ने तो जाना है, चला जाएगा वो। देखिए जिनके वीजा प्रोसेस में है उन लोगों ने डेफिनेटली जाना है। अगर जो पहुंच जाएगा वो वहां पर रिसेप्शन में पैसे दे देगा, लेकिन आप लोगों की तरफ से रेट एक यूनिवर्स हो जाएगा, फैसिलिटी सारी यूनिवर्स मिल जाएंगी, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होएगी। सर अभी ये मैं चाहता हूँ। जी बिल्कुल, अभी जो इग्नेशियस साहब शेयर करेंगे तो वो रेट्स फिर सबके लिए होंगे, जो आप जिनको हम कोड देंगे तो वो रेट सबके लिए बराबर होंगे ना सर, एक जैसे होंगे। और डिस्काउंट जैसे आप कुछ कर सकते एक्चुअली इसमें मैं थोड़ी सी अपनी इनपुट अगर दूं, आप इजाजत दें तो तीसरा ये कि अगर एक हम अगर फॉर्म एक बना लें, जैसे कि आपने माशाल्लाह पहले भी बनाया, जिसमें हम अपनी फॉर्म्स की डिटेल दे रहे हैं, एक कोई भी लिस्ट बन जाए तो कम से कम टीडैप के इल्म में ये भी होगा, हम पेमेंट तो करेंगे, जाहिर सी बात है, जिसके वीजे लगे हैं वो तो जाएगा और पेमेंट भी करेगा। और ये इग्नेशियस मेरे ख्याल में इतनी फैसिलिटी तो देंगे कभी आप यू कैन पे ऑन द साइट, जब आप तशरीफ ला रहे हैं तो आप पेमेंट कर दें, वो वेदर एडवांस हो या बाद में हो तो उनके ऊपर मुनसर है। एटलीस्ट ये होगा कि हम अपनी एक रिक्वायरमेंट जो है, फर्ज करें मैं हूं, मेरे साथ 3 आदमी जा रहे हैं मिला के, तो हमने आपको लिख दिया कि जनाब हमें एक स्टैंडर्ड रूम चाहिए डबल ऑक्यूपेंसी और एक सिंगल चाहिए, अपनी डिमांड एक लिस्ट में दे दी आपको और आप ही के दिए हुए फॉर्म पे भर दिया। और उसके बाद जब ये स्काई होटल ने हमारे रूम नंबर्स जो है हमें अलॉट किए, तो आपके सामने होंगे कि कौन शख्स किस कमरे के अंदर रह रहा है, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप उससे रब्ता करना चाहें तो आप उससे रब्ता कर सकें, क्योंकि हो सकता है कि 4-5 दिन के लिए हर शख्स कोई मोबाइल नंबर वहाँ के लोकल ना ले, तो एटलीस्ट हमारे पास होटल का कॉन्टैक्ट होगा। और इसमें मेरे ख्याल में कोई भी मजाका नहीं है, क्योंकि हर शख्स अपने पैसे अदा करने को तैयार होगा और आपको उसकी इंफॉर्मेशन उसके पहुंचने से पहले भी दस्तियाब होगी कि भाई ये शख्स आएगा और इस कमरे में रुकेगा और इसने इतने पैसे देने। सर जी बिल्कुल सेकंड करूंगा, सॉरी मेरा ऐड कर लीजिएगा, बिल्कुल मैं सेकंड करूंगा भाई को। अजीम साहब ने जो कहा, इसमें देखिए एक लिस्ट भी आ जाएगी, इवन कि अगर आप लोग ज्वाइंटली जाएंगे तो रूम नंबर भी मे भी हमें पहले अलॉट हो जाए, हमें पता है कि हमने किस रूम में जाना है, और अगर हम डबल पे जा रहे हैं तो हमारे साथ कौन है, अगर सिंगल पे जा रहे हैं तो फिर क्या है, मेरे राइट लेफ्ट में कौन लोग हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर बंदोबस्त हो जाएगा अगर जिस तरह इन्होंने अजीम साहब ने कहा एक फॉर्म क्रिएट हो जाए और आप कलेक्टिव डाटा चला जाए और आपकी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आ जाए कि भी इस्लामुल्लाह आपका ये रूम नंबर है अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट। तो पेमेंट तो डेफिनेटली हम लोगों ने करनी है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि पेमेंट का कोई इशू आएगा। नहीं सर, हम 220 लोगों की लोकेशन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आप लोगों को हम प्रोसीजर बताएंगे, डिस्काउंटेड रेट बताएंगे, आप अपना बुक खुद कराएं रूम एज पर योर रिक्वायरमेंट, और जो डिटेल्स की बात है कि कब आप रीच कर रहे हैं आप जोहानिसबर्ग और कौन से होटल में स्टे कर रहे हैं, रूम नंबर का भी इनफैक्ट अगर आपको शेयर करना तो हम गूगल फॉर्म को अकॉर्डिंगली अपडेट करेंगे और उसी में आपकी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लें तो इसमें बाद में इशू आएगा कि हमारा रूम सही नहीं था और टीडैप ने बुक कराया है, तो वो हमें काइंडली उसको वो करके दें। लेकिन हम आपकी मैनेजर से तो बात करा सकते हैं एंड पे, लेकिन हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी लेंगे रूम भी फिर हम आपके एंड पे बुक कराएं तो वो फिर बाद में इशू हमें ही आएगा। और 220 थोड़ी सी कम्युनिकेशन फीजिबल नहीं थोड़ी सी कम्युनिकेशन में एरर आ रहा है, मेरे ख्याल में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपकी जिम्मेदारी खुदा न खास्ता नहीं है, जिम्मेदारी हमारी ही है। हम ये कह रहे हैं कि हम अपने बिहाफ पर आपको अपनी डिटेल फॉरवर्ड करते हैं और इग्नेशियस के पास ये चीजें चली जाएंगी, वो हम जो भी दे रहे हैं हर शख्स उसको एक ईमेल कर रहा है आपके सिर्फ डाटा के लिए कि जनाब कौन किस होटल में रुका हुआ है, आपको पता हो कि जनाब इन लोगों को कमरे अलॉट हो गए। आपकी जिम्मेदारी खुदा न खास्ता बिल्कुल भी नहीं, जिम्मेदारी हमारी है, आपके पास एक डाटा होगा, ये कहने का मतलब। वो तो हम करेंगे, वो तो अपडेट करेंगे एग्जैक्टली, वो तो है, अपडेट करेंगे हम एज वी अप्रोच द इवेंट। अभी मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, मतलब एक सेकंड अभी हम अपडेट कर रहे हैं कि किस किस का वीजा इशू होने शुरू हो गए, क्योंकि नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि टिकट्स किसके हो गए, कौन सी एयरलाइंस है, फ्लाइट नंबर क्या है, अराइवल टाइम क्या है, होटल कौन सा है, रूम नंबर अगर है तो वो कौन सा है, इन्फॉर्मेशन हमें सारी आप लोगों की चाहिए होगी ताकि हमारी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके। तो वो तो हम करेंगे, वो है, लेकिन हम आप पे रूम बुक नहीं करा सकते। जी जी बस ठीक है, यही बात ही इनके भी कहने का मकसद था सबका कि फॉर्म में एटलीस्ट आपको पता हो कि आपके कौन से पार्टिसिपेंट कब आ रहे हैं, कितने दिन के लिए आ रहे हैं। अब जरूर हम चाह रहे हैं, उसके अलावा अगर कहीं और से कोई फ्लाई करके आ रहा है यूके से यूएसए से
तो हम चाह रहे हैं एटलीस्ट बुकिंग तो हो जाए उनकी, तो एटलीस्ट आपको डेटा हो और रूम्स अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि कोई किसी और होटल में रह रहा हो, कोई किसी और होटल में रह रहा हो। तो एक फॉर्म बना लेते हैं कि यहाँ से अगर फॉर से 6 लोग जा रहे हैं यूनिवर्सल पैकेजिंग से, तो 4 का नाम तो आपको पता ही है, 2 और हैं, एटलीस्ट वो रूम तो हमें कोड पे मिल जाएगा ना, इसी कोड पे 2 अलग लोगों का भी रूम मिल जाएगा ना हमें, ऐसा ही होगा ना। तो बस ये शेयर कर दें और फॉर्म बनवा लें। सर फॉर्म तो जो हमारे हम उसी को अपडेट करेंगे, अभी उसमें हम अपडेट करके आप लोगों से शेयर कर लेंगे, आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें अपडेट कर दीजिएगा। होटल की इन्फॉर्मेशन जब हमें आ जाएगी, बुकिंग किस तरह से करनी है, प्रोसीजर क्या है, कोड क्या है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। इवेंचुअली आप लोग उसमें बुक करेंगे, कुछ डेलीगेट्स दूसरे होटल्स भी लेना पसंद करेंगे, तो उनकी मर्जी है, हर किसी की अपनी चॉइस है। तो जो भी आपने होटल बुक किया, जो भी एयरलाइंस है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, आप अपने हमारा जो गूगल फॉर्म होगा उसमें अपडेट करते रहिएगा, वो कोई इशू नहीं है। हमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप लोगों की टिल लास्ट मोमेंट चाहिए होगी, अपनी अपडेट के लिए, अपनी कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक, थैंक यू जी, ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे, ठीक है, गो अहेड, थैंक यू जी। और कोई किसी को सर ऐसा पॉसिबल है कि ग्रुप ट्रैवलिंग आप अरेंज कर सकें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से? जो कराची से जा रहे हैं वो अपना एक ग्रुप बना लें और ग्रुप ट्रैवलिंग करें, एक ही फ्लाइट हो और एक ही टाइम हो, और जो भी इकोनॉमिकल नेगोशिएटेड रेट्स हो, अगर पॉसिबिलिटी है एयरलाइन से, अगर हम नेगोशिएट इकोनॉमिकल रेट पे कर सकें। हेलो, अच्छा बोलते हैं कि वो हेलो, जी सॉरी आमिर साहब, आपकी बात का जवाब ये है कि नहीं, एयरलाइंस वाला तो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, और ग्रुप में आप लोग ही आपस में कुछ कोऑर्डिनेट बिल्कुल कर लें। और इवेंचुअली होगा भी ये कि 2-3 दिन के अंदर अच्छे खासे 220 हमारे डेलीगेट्स आ रहे होंगे, तो ग्रुप तो वैसे ही बन जाता है। कोऑर्डिनेट आप लोग करना चाहें विद इन योरसेल्फ आप बिल्कुल कर लें, लेकिन एयरलाइंस वाला भी हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पे नहीं है। वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं एक सजेशन था कि अगर टिडैप अगर ऑर्गेनाइज कर दे, एक ऑर्गेनाइज वे पे ग्रुप बन जाता, क्योंकि सबकी अप्रोच है टिडैप में, तो एक ऑर्गेनाइज हो जाता था। वैसे हम चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ये एक मैं ऑर्गेनाइज वे पे चाह रहा था, एक सजेशन थी, पॉसिबिलिटी है तो सही है। बॉस, एक हमने एक बीच में एक साहब ने, इनामुर रहमान साहब आई थिंक, उन्होंने कोई नाम शेयर किया था, और एक हमारे साथ भी काम करते हैं अलमरात ट्रेवल वाले, आपके ग्रुप में शेयर हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो अब आपकी डिस्क्रेशन है, चाहें तो आप अपनी तरफ से कोई ट्रैवल एजेंट लाके आपस में मिलके कर लें, या वो जो एक हमने वो इनाम साहब ने रिकमेंड किया अलमरात ट्रैवल वाला, उसको आप इसमें कर लें, तो वो आपकी चॉइस है अपनी, ये आपकी अपनी चॉइस है, कर सकते हैं ग्रुप भी कर सकते हैं, आप प्राइवेटली भी कर सकते हैं कि 5-7 लोगों के 10 लोगों के जो भी कोई एक ट्रैवल एजेंट से करा लें तो ग्रुप आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो एक हम ऑलरेडी शेयर हुआ है, अगर आप उसको सर्च करेंगे तो अलमरात के नाम से मौजूद है ग्रुप में। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया। अमरात क्या है? अल अमरात के नाम से हमारे पास ये काम करते हैं टीडाप में, हमारे ऑफिशियल हैं एक तरह से देखा जाए तो। ऑफिशियली हमारे जितने ऑफिसर्स और हमारे जो लोग हैं वो आते जाते इसी के थ्रू हैं, बट हमने कोई आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, दैट इज नॉट ऑब्लिगेटरी। ठीक है, आप अपनी मर्जी से किसी से भी ओके आई अंडरस्टैंड। अगर था सॉरी हाँ सर बस ये ग्रुप में आपने इनका ईमेल एड्रेस डाला हुआ है, या फिर अभी अब बताना चाहेंगे आप अल अमेरिट्स का? मैं ग्रुप में ईमेल एड्रेस डाल देता हूं, दैट इज नॉट एन इशू। ओके, थैंक यू जी सर। जी फैसल साहब, मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिएगा कि हमें वहाँ पे इंटरप्रेटर की अवेलेबिलिटी करवा देंगे आप फॉर द लोकल कस्टमर्स? दैट इज मेरे ख्याल से वो तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, हमें नहीं कहा गया कि वहां पे आपको किसी इंटरप्रेटर की जरूरत होगी। हमारे जो मिशन है उसमें अगर ऐसी बात होती तो वो जरूर हमें इन्फॉर्म करते कि वी रिक्वायर सम इंटरप्रेटर, और उसके लिए फिर हम करते मैनेज, बट ऐसा हमें कुछ नहीं बताया गया। लेकिन हम नोट करके हम पूछ भी लेंगे ये बात कि इंटरप्रेटर की जरूरत तो नहीं है, वैसे नॉर्मली है नहीं वहां पे। दूसरे अफ्रीकन रीजन से कोई विजिट कर रहा है मे बी, मुझे आई डोंट नो, तो लेकिन वहाँ का लोकल लैंग्वेज का कोई अगर इंटरप्रेटर की जरूरत हो तो उसमें क्या फैसिलिटेट होगा वहाँ से? हमें ये चेक कर दीजिएगा बस, क्योंकि ये एक है कि वहां जाके हमें कम्युनिकेशन गैप ना आ जाए जहाँ पे हम जाके स्टक हो जाए। सही है, अगर इंग्लिश है तो इट्स एवरीथिंग इज ओके देयर। चलिए आपको सर अहमद साहब को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं।
मैं 2 मरतबा जा चुका हूँ जोहान्सबर्ग, जो अफ्रीका हेल्थ होती थी उसमें, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता क्योंकि वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है, तो एवरीबडी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो नथिंग यू नीड टू हैव एनी इंटरप्रेटर फॉर इट। और जो रीजन से कंट्रीज आएंगे तो वो भी मोस्टली क्योंकि बिजनेस मैन ही होते हैं, तो उसमें भी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्पीक इंग्लिश। हाँ बिल्कुल, तो उसमें कोई इशू नहीं है, अदरवाइज हमारा मिशन हमें बता चुका हो। अच्छा, आई जॉइंड एट द लास्ट जब मीटिंग चल रही थी, तो वो आवाज कट गई यार, पासवर्ड वो नंबर दोबारा शेयर बोलो। जी आवाज कट गई आपकी अमर साहब। किसी और का कोई सवाल है? फैसल साहब, आपने हमें इन्फॉर्म किया था कि नाइजीरिया से जो एम्बेसडर है वो जो करीबी कंट्रीज है वहाँ से पोटेंशियल बायर इनवाइट कर रहे हैं, मालावी, अंगोला, तो वहाँ से पॉसिबल है क्योंकि मोज़म्बिक भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो मोज़म्बिक से हम कई कंट्रीज कंपनीज है फार्मास्यूटिकल में काम कर रही हैं और हमारे ऊपर कंज्यूमर आइटम भी जाते हैं, कि क्या हमें उम्मीद रखें कि वहाँ से भी हमें बायर्स मिलेंगे इनविटेशन पे? बिल्कुल बाबर साहब, आपके साथ हमने ग्रुप पे, हमारे पास अली तमकीन साहब भी ऐड है, हमारे जो कमर्शियल काउंसलर हैं नाइजीरिया लेगोस में, उनके साथ शेयर कर लें ग्रुप पे या इंडिविजुअली हमारे साथ, जो आपके कोई टारगेट बायर्स हों जो आपके जहन में हो कि जिनको हम इनवाइट करें, तो आप उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ बिल्कुल शेयर करें, हम आगे अपने मिशन को फॉरवर्ड करेंगे उनको इन्वाइट करने के लिए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू जी मोस्ट वेलकम। जी और किसी का सवाल है? मीटिंग एंड करते हैं फिर, थैंक यू सो मच। और जी जो हमारी 1 बजे मीटिंग हुई थी लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ साउथ अफ्रीका में, तो क्योंकि बहुत से लोग अटेंड नहीं कर पाए, तो उसकी रिकॉर्डिंग हम जैसी हमें मिलती है हम उसको शेयर करेंगे ग्रुप पे सबके इंफॉर्मेशन के लिए। तो मैसेज जो है इन समरी उनका यही है वहाँ की लॉजिस्टिक्स कंपनी का, कि अभी बाय सी तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, लॉजिस्टिक्स बाय एयर ही पॉसिबल है, और आप लोग एज सून एज पॉसिबल अपने जो कमर्शियल इनवॉइसेज हैं या पैकिंग लिस्ट है वो उनके साथ शेयर कर दें, और ईमेल एड्रेस ग्रुप पे शेयर हो चुका है लॉजिस्टिक्स कंपनी का, तो काइंडली इस पे वर्किंग अपनी विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज या नेक्स्ट वीक आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि उन्होंने 14 नवंबर डेडलाइन दी है कि जिसमें आप उन तक सामान पहुंचा दें। तो ये हम ग्रुप पे भी लिख देंगे, ग्रुप पे भी अपडेट करते रहेंगे, और होटल की इन्फॉर्मेशन जैसी आती है हमारे पास बुकिंग की वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, और आप लोगों से इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।